I'm Gopal Anand, the banker's Adda.com capsule maker. The same capsule which helps you out in getting good scores in general awareness portion of different examinations like SBI PO and IBPS. To help you out in the general awareness portion, I am coming with my e-learning course in which I will be teaching you banking awareness and static awareness of Indian states and union territories. Hello students, I'm Swati and I've been helping you out in preparing computer awareness for various banking examinations. Yes, computer is a very vast subject, and to help you out in understanding what to study and how to score, I've created an e-learning program for computers. We all are worried about reasoning, the level of questions and moreover the surprises. So here I have compiled a package especially for banking reasoning which will deal with every level from basics to higher levels. We have devised a unique e-learning courseware for you to overcome all the hurdles and crack your upcoming examinations. This courseware does not only consist of the previous year asked questions but also the questions based on new patterns. Quantitative aptitude. Difficult to understand so many concepts? Let's make it easy. Here I am, Sumit Verma. I have designed a course in which you will be able to understand all the concepts and all the types of questions. The Bank Power module includes 100+ hours of high-quality videos by our expert faculties, tricks and shortcuts to solve questions in a faster way, e-books for subjects Maths, English, Reasoning, General Awareness and Computers, online test series with all India ranking and detailed solutions, online and face-to-face doubt clearing sessions, available preloaded on a tablet or SD card. Hi friends and welcome to Adda247. I know my dear friends that all of you have been waiting for the Hindu editorial discussion. तो भाई wait कराने के लिए I'm really sorry. Well by the way आज क्या हुआ ना कि आज जो है एकदम इतना ज़्यादा पावर प्ले में जो है आतिशबाजी होने लगी कि वो चौके एंड छक्के के चक्कर में जो है थोड़ा सा जो है मैच डिले हो गया और इसी चक्कर में जो है अल्टीमेटली द हिंदू एडिटोरियल भी उसके बाद ही आ पाया. वेल माय डियर फ्रेंड्स, सिंस वी आर हियर, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट आर्टिकल फॉर रिव्यू ओवर हियर. Well, my dear friends, the first article over here is murder at noon. हम सभी को पता है कि क्या हुआ हमारे सीआरपीएफ जवान्स के साथ. All of us know that the unfortunate incident in which 25 of our CRPF fine men got martyred at the hands of the Naxals. And my dear friends, that is the reason why we at Adda247 have decided to pay a tribute to all of our CRPF jawans who got martyred and in fact also to those who are injured. ठीक है भाई, तो इसीलिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे सभी शहीद जाबाज जवानों को हम यहाँ चाहेंगे कि 1 मिनट के लिए हम जल्दी से मौन धारण करें और उसके बाद हमारा जो आज के आर्टिकल्स हैं इनको भी अल्टीमेटली हम फिर एनालाइज कर सके. सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज bear with me and please join me in showing your respects for our Jaman. Let's have a silence for 1 minute for all in the respect of all of our Jamans. May the prayers of us remain with the families of all the martyred Jawans that we had. And next slide and 1 minute silence please. Can we have the next slide, please? Let's have the silence.
So by the way, now we can start the business and you can see my dear friends, this actually ये basically एक sand structure है जिसको कि build up किया है सुदर्शन पटनायक जी ने. So actually this artwork comes from Mr. Sudarshan Patnaik, so you know he's also a very fine artist. Now let's take a look at the next slide and let's start the analysis. Well, Monday's ambush of a Central Reserve Police Force battalion in Chhattisgarh's Sukma district is a tragic reminder of the failure of the Indian state to effectively address the security challenge the Maoist continues to pose. तो देखा जाए तो इस मंडे को जो बेहद दुखद घटना घटी हमारे सीआरपीएफ के एक बटालियन के साथ सुकमा डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ के, ये अल्टीमेटली एक बेसिकली हमें याद दिलाता है कि ये जो छत्तीसगढ़ का जो स्टेट है वो कितना बुरी तरीके से फेल हो रहा है माओइस्ट चैलेंज को डील करने के लिए. यू नो, सो द मंडेज एम्बुश और द ट्रैप इन विच यू नो सीआरपीएफ फाइन मेन वर मार्टियर्ड and many of them got injured at the hands of the Naxals. It clearly shows, you know, what actually is the level of failure of Chhattisgarh in dealing with Naxalites. Alright, my dear friends, at least 25 CRPF personnel were killed near the Burkapul camp in South Sukma while on duty to provide protection for road construction on the Dornapul-Jangargunda belt while the Maoist struck. Well, my dear friends, आप लोग जानते ही हैं, हम सब लोग जानते हैं कि कम से कम बेसिकली 25 सीआरपीएफ जवानों की शहादत हो चुकी है इनफैक्ट ऑलरेडी, और बाकी बहुत सारे भाई इंजर्ड भी हैं. तो अल्टीमेटली ये जो शहादत हुई बेसिकली वो बुरकापल कैंप में हुई, साउथ सुकमा बेसिकली वहाँ के इलाके में. और बेसिकली जो इनकी शहादत हुई उस टाइम पे ये जो सभी जवान थे, ये जो रोड कंस्ट्रक्शन वहां पे हो रही थी एक, उसको जो है प्रोटेक्शन कर रहे थे, उसको बेसिकली गार्ड कर रहे थे. ऑलराइट, सो अल्टीमेटली यू नो दीज 25 सीआरपीएफ फाइन मेल who got martyred, by the way, they were, you know, actually they were providing protection and they were giving actually guard to a road construction work that was actually being continued over there, you know, and that was the time when the Maoists struck. Well, this is the deadliest in such attack, you know, this is the deadliest such attack in the past 7 years. अब देखा जाए तो पिछले 7 सालों में ये बहुत ज़्यादा इनफैक्ट सबसे ज़्यादा घातक हमला था. Alright, my dear friends, because it came in the afternoon. ये बिल्कुल दिन दहाड़े हमला किया गया था. So actually, you know, this was actually a very deadly, a very dangerous such kind of an attack in the past 7 years because the attack took place right in the afternoon, you know. In April 2010, in neighboring Dantewada district in the same Bastar division of the state, 76 CRPF personnel had been killed in a Maoist strike. In fact, 2010 अप्रैल में भी, इनफैक्ट ये शायद कह सकते हैं आप कोइंसिडेंस है कि वो घटना भी अप्रैल में हुई थी और ये घटना भी अप्रैल में हुई है. 2010 अप्रैल में हम सभी को याद होगा कि दंतेवाड़ा का जो डिस्ट्रिक्ट था इनफैक्ट वहां पर 76 सीआरपीएफ पर्सनल्स को घेर करके बिल्कुल भून दिया गया था, यू नो. तो उनकी भी शहादत हुई थी और वो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही हुई थी, छत्तीसगढ़ में ही. सो यू नो, all of us, I suppose, we would actually remember that in April 2010, you know, Maoists actually stuck in the neighboring region of, you know, Bastar, by the way. That region was of Dantewada district, and over there 75 CRPF personnel, 76 CRPF personnel got martyred at the hands of Naxalites, you know. They were rounded up and then they were martyred. So my dear friends, by the way, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखो ये जो ultimately topic है, this can actually, you know, this can actually come in the way of red terror or Naxalite, you know, or challenge of the Naxalites, and you might have to write a descriptive on the challenge of Naxalites or red terror in your examinations, and that's why this particular article is pretty important. Well, besides confirming the strong Maoist hold in the region, Monday's attack also raises questions on the SOPs, that's your standard operating procedures, and the precautions adopted by the CRPF. तो देखा जाए तो मंडे का जो ये दिन दहाड़े जो हमला किया गया, इससे दो चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं. पहली बात ये, माओइस्ट जो है बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में मौजूद है, बिकॉज 300 माओइस्ट ने हमला किया था, वो बेसिकली दिन दहाड़े हमारे सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर. तो ऑब्वियस है कि उनकी संख्या बेहद ज्यादा है इस पर्टिकुलर इलाके में. और साथ ही में अगर देखा जाए तो जो सीआरपीएफ बेसिकली क्या एसओपी और क्या प्रिकॉशंस ले रही है, ये इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है, यू नो, माय डियर फ्रेंड्स. सो अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर अटैक, यू नो, दिस अटैक फ्रॉम द कवर्डली माओइस्ट एक्चुअली, you know, it poses two kind of questions. First of all, what actually, you know, what are the SOPs and the precautions that are being taken by the CRPF? And the second question, by the way, that are the Maoists are really in fact in a very good position in this particular area? Well, my dear friends, now it's time to take a look at question number 1, and here it comes.
So Monday's ambush of a Central Reserve Police Force battalion in Chhattisgarh Sukma district, my dear friends. Now here are your 5 options. Tell me what's the correct answer. Your time starts now. Hurry up, guys. Hurry up. I hope the timer is on. Come on, guys, hurry up. Last 10 seconds. The time is up. तो भाई देखा जाए समय देखिए समाप्त हो चुका है and you had to give me the answer. You had to give me the correct answer from all of these 5 options. Well, the question was Monday's ambush of a Central Reserve Police battalion in Chhattisgarh Sukma district. Well, option number 1 is a tragic reminder of the success of the Indian state to effectively address the security challenge. Well, no, there have been no success, by the way, and by the way, this was not written in the previous slide, hence option number 1 cannot be the answer. Option number 2 says, is a tragic reminder of the failure of the Indian state to effectively address the, security challenge the terrorists continue to pose. Well, they can be called red terrorists, but this was not as mentioned in the previous slide, hence this cannot be the answer as well. Option number 3 is a sad reminder of the failure of the Indian state to effectively address the security challenge that the Maoists continue to pose. This can be the correct answer because it's pretty close with the previous options, with the correct one that was given in the slide. Now, option number 4 says, isn't a tragic reminder. Well, it was given is a tragic reminder, hence option number 4 cannot be the answer. Option number 5 is a tragic reminder of the failure of the non-Indian state. Well, it is an Indian state. That's why option number 5 is also wrong, which means, my dear friends, all those of you who chose option number 3, you have done a good job because yes, that is the correct answer. And I hope that with this particular score, with this particular answer, your score would have, your accounts would have opened and you would have scored 1-on-1 for sure. उम्मीद करता हूं कि आपका खाता खुल गया होगा और आपका स्कोर 1-on-1 हो चुका होगा. Now, let's take a look at the next part of the article and here it comes. Around 300 armed insurgents, that's rebels, swooped or descended quickly down on the battalion around 1 p.m. when the soldiers were taking a break for lunch and their guard was presumed to have been down. अब देखा जाए तकरीबन 300 बेसिकली कह सकते हैं आप 300 की संख्या में अगर वो इतना ज़्यादा बहादुर है तो इतनी बड़ी संख्या के होने की क्या जरूरत थी. इसलिए दिखाता कितने कावर्डली हैं, कितने कह सकते आप कितने डरपोक किस्म के लोग हैं ये. सो अल्टीमेटली 300 हथियार बंद बेसिकली जो नक्सलाइट्स हैं वो अचानक से जो है बटालियन के आसपास तुरंत बेसिकली उन्होंने हमला कर दिया 1 बजे के आसपास. और साथ ही में कायरता की देखो हद है कि how cowardly are these people. They attacked the CRPF men while the CRPF soldiers, they were having lunch. जब वो बेचारे बैठ के खाना खा रहे थे तो उन पे बेसिकली इन लोगों ने घेर पे हमला करके इन पे गोली चलानी शुरू कर दी. So that shows why they are such bloody cowards anyways. So around 300 armed insurgents or rebels swooped or descended quickly down on the battalion around 1 p.m. when the soldiers were actually taking a break, and they were having lunch, so their guards were actually presumed to be down. Anyways, well, according to the initial estimates and eyewitness accounts, the Maoists used automatic weapons that they had stolen a month ago when they ambushed and killed a dozen CRPF men not very far from this encounter site. अब देखा जाए बेसिकली तो जो वहां पर चश्मदीद वहां मौजूद थे उनके हिसाब से जो माओइस्ट वहां पे इन्वॉल्व थे उन्होंने ऑटोमेटिक वेपन से हमला किया था. और बेसिकली ये जो शायद ऑटोमेटिक वेपन्स थे वो उन लोगों ने 1 महीने पहले ही और भी बेसिकली कह सकते हैं आप लगभग 1 दर्जन जो है सीआरपीएफ बेसिकली जवानों को शहादत हासिल करवाई थी, उनको शहीद किया था और उनसे बेसिकली उन्होंने वो चुरा लिए थे. तो चोर तो है ही खैर एनीवेज, तो उन्होंने वो हथियार चुराए हुए थे जिनसे वो हमला कर रहे थे. So according to initial estimates and eyewitness accounts, the Maoists actually used stolen automatic weapons that these guys stole from CRPF, from another CRPF party that got massacred a month ago near the same site. Now,
Well, this side of the attack too carried a message. The road under construction will provide easy access to the backward region where the Maoists have for long held or stayed, have long held sway or strong influence. अब देखा जाए तो अल्टीमेटली माओइस्ट ने इस पर्टिकुलर रोड कंस्ट्रक्शन की साइट को चूज ही इसलिए किया क्योंकि ये जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रही थी ये माओइस्ट के इलाकों से जो है मॉडर्न दुनिया को जोड़ रहा था और अल्टीमेटली अगर ऐसा होता तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, इसीलिए बेसिकली उन्होंने जानबूझ के इस रोड कंस्ट्रक्शन वाली साइट पर हमला किया. So the road under construction, by the way, the road under construction would actually provide easy access to the backward region where these Maoists would have had long, they actually had they have had for long got a very strong influence. Now, I hope इतना समझ में आ गया होगा. Okay, well, आगे देखते हैं. It has been a long-held strategy of the Maoists to blow up infrastructure that enables connectivity such as roads and bridges or establishes the presence of the states such as schools. अब देखा जाए भाई तो ये बहुत ही लंबी किस्म से देखा जाए तो बहुत लंबे टाइम से ये प्रथा चली आ रही है इन माओवादियों की, इनफैक्ट इन माओइस्ट की, इन ब्लडी कावर्ड्स की, कि बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर जहां भी बिल्डअप होता है उस चीज को बॉम्ब से उड़ाएंगे या उस चीज को बिल्कुल खराब कर देंगे, हटा देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, नष्ट कर देंगे. फिर भले ही वो रास्ते हो, भले ही वो ब्रिजेस हो, भले इनफैक्ट वो बेसिकली चाहे स्कूल हो, मतलब कोई भी बेसिकली कह सकते हैं आप सिविल सर्विस की बेसिकली कोई भी चीज हो तो उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि बेसिकली मॉडर्न वर्ल्ड से कुछ चीज जुड़ ना सके. सो इट हैज बीन अ लॉन्ग हेल्ड स्ट्रेटजी it has been there for a long time on the part of the Maoists because they have always tried and they have always blown up infrastructure that actually enables connectivity such as roads and bridges or actually establishes the presence of the states such as schools. Okay, चलो मैं उम्मीद करता हूं ये आप समझ में आ गया होगा. अब देख लेते हैं भाई, आगे समझते हैं. Now the response must be to double down to the extent the presence of the administration in Bastar to break the isolation or seclusion and reach social services to people. देखा जाए तो इसका जो सबसे सटीक रिस्पॉन्स होगा वो यही होगा कि जो जिस लेवल पर भी सिविल सर्विसेज इस टाइम पर वहां मौजूद है उन इलाकों में उसको बिल्कुल डबल कर दिया जाए और जो भी रिक्वायरमेंट है, जितना भी फोर्स रिक्वायरमेंट है, फोर्स को भी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी बिल्कुल जो है मतलब प्रोवाइड किए जाए ताकि अल्टीमेटली जो शहादत हुई है लगातार हमारे जवानों की वो बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए. So the ultimate response must be to develop all the efforts of of the civil service connectivity and just overnight or what you would say in a planned way get the connections done to this region and let's increase the connectivity in every way possible. All right, now there's also a need to boost the morale of the security and the police forces. और साथ ही में भाई जो वहां पर पुलिस फोर्सेस हैं, जो साथ ही में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं लाइक सीआरपीएफ, तो इन सब का बेसिकली मोरल बेसिकली बूस्टिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज अल्टीमेटली नाउ एंड देन वी कीप ऑन हियरिंग इंस्टेंसेस वेयर बेसिकली जहां पर हम लोग सुनते ही आते हैं ऐसी घटनाएं, ऐसी दुखद घटनाएं जहां पर बार बार जो है हमारे जवान जो है शहीद होते आ रहे हैं इन माओइस्ट इलाकों में. तो अल्टीमेटली हमारे जो जवान है उनका बेसिकली हौसला अफजाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. So ultimately the people, the paramilitary and the police over there needs morale boosting as well, So, well, the recent spat or series of attacks and the ambushes indicates a breakdown in intelligence gathering possibly on account of a lack of effective coordination between the state police and paramilitary forces. Well, my dear friends, enemy is the enemy and he will attack you no matter how stupid or intelligent you are. भाई दुश्मन का काम होता है हमला करना और दुश्मन आप पे हमला करेगा ही, लेकिन मैं समझता हूं इस पर्टिकुलर हमले में, इनफैक्ट मैं क्या समझता हूं यहां पर भी इस जो आर्टिकल लिखा गया है शायद वो भी यही समझते हैं कि यहां पर जो गलती थी वो माओइस्ट से ज्यादा बेसिकली इंटेलिजेंस फेलियर की थी. बिकॉज अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता बिटवीन द स्टेट पुलिस एंड द सीआरपीएफ तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती और वो 25 जवान जो शहीद हो गए शायद वो आज जिंदा होते. All right, my dear friends, so so there's actually what do you say, it's an extreme need, it's the need of the hour to have a proper communication channel between the CRPF and the state police so that proper intel sharing can be there so that such incidents never ever happen again in the future. Now let's take a look at the question, by the way, and here comes the question number 2. So which of the following is true according to the passage? तो आपको बताना यह है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा सत्य है पैसेज के हिसाब से. आपके पास है 30 सेकेंड. योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ. हरी अप गाइस.
Come on guys, this next is more. तो समय देखो भाई समाप्त हो चुका है आप सभी के लिए। अब देखा जाए तो आई हैड आस्क्ड यू कि इनमें से कौन सा सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट? ए सेज अराउंड 300 आर्म्ड इंसर्जेंट्स swooped down on the battalion around 1 p.m. when the soldiers were taking a break for lunch and their guard was presumed to have been down। बिल्कुल, तो कह सकते हैं आप ये सत्य है अगर हम देखा जाए तो भाई बेसिकली जो दिया हुआ है स्टेटमेंट उनको देखते हुए। देन स्टेटमेंट बी में लिखा हुआ है द माओइस्ट यूज सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स। वेल दे यूज्ड ऑटोमेटिक वेपन्स अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस, तो यानी कि बी जो है ये गलत है, ऐसा नहीं है। देन सी में दिया हुआ है इट हैज बीन अ लॉन्ग हेल्ड स्ट्रेटजी ऑफ द माओइस्ट टू ब्लो अप इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इनेबल्स कनेक्टिविटी सच एज रोड्स एंड ब्रिजेस or bridges, and bridges or establishes the presence of the state such as the schools. Yes, this was given in the previous slide, hence this should be considered as true। यानी कि भाई जो A है that is also true and C is also true, which means only A and C। Option number 4, that is the correct answer, my dear friends, and I hope that all those of you who chose option number 4, your scores, my dear friends, would have gone up to 2 of 2 for sure, and if it's not 2 of 2, even 1 of 2 is also a good score। Now let's take a look at the next part of the article, after which there shall be a parajumble for all of you guys to solve। Now here comes the next part. So it may have had no bearing or connection on the attack or the probability of averting or avoiding it, but the fact that the post of the DG of the CRPF continues to be vacant is actually a lapse or a blunder multiplied or amplified by the tragedy। अब देखा जाए शायद मान लीजिए कि कनेक्टिविटी इवन अगर इंटेल होता तब भी हो सकता है कि ये घटना नहीं रोकी जा सकती। चलो मान लेते हैं ऐसा हो भी सकता है और साथ ही में अल्टीमेटली शायद कुछ कनेक्शन इसका नहीं भी है इंटेल नहीं होने का इस पर्टिकुलर घटना से, लेकिन तब भी देखा जाए तो बेसिक सा काम ये होता है कि अल्टीमेटली एवरी पर्टिकुलर बॉडी मस्ट हैव अ चीफ and CRPF doesn't even have a chief। CRPF basically it's a very honorable paramilitary force and still it lacks a chief। अभी तक डायरेक्टर जनरल की पोस्ट जो है वो बिल्कुल खाली है, तो ये बहुत बड़ी बेसिकली कह सकते हैं now this is a very big blunder। ये सरकार के एंड पर बहुत ही बड़ी कह सकते हैं आप भूल है, बहुत बड़ी चूक है, और अल्टीमेटली ये इनफैक्ट कह सकते हैं इसका जो असर है, इस चूक का जो असर है वो ऐसी घटनाओं से बढ़ता ही चला जाता है। So it may have had no bearing or connection with the attack or even the possibility or the probability of avoiding it, but the fact that the post of the Director General of the CRPF continues to be vacant, there is no Director General of the CRPF, is actually an absolute blunder, and since the effect of such blunders gets multiplied by the tragedy। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं। Now blunder means a very giant mistake। Okay, so the inadequacies or shortages are more grave than the administrative oversight। अब देखा जाए भाई ऑब्वियस है कि ये जो कह सकते हो आप, ये जो अल्टीमेटली जो शॉर्टेजेस है, जो कमियां है, ये बहुत सीरियस बेसिकली कह सकते हैं आप, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस किस्म की कमियां हैं और इसमें बहुत ज्यादा आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है यहाँ पर। So such shortages are actually very grave, they are very serious and they require a serious oversight, they require a serious thinking as well। Well, the state police forces in the Maoist affected areas have more or less abdicated, they have more or less abdicated or left away their duties of law and order, leaving the job almost entirely to the paramilitary forces। अब देखा जाए my dear friends तो बहुत बड़ी जो गलती है वो स्टेट पुलिस की भी है छत्तीसगढ़ के इलाके में, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इलाके में जो पुलिस बेसिकली है, स्टेट पुलिस जो है वहां की, उसने जो है कह सकते हैं पल्ला झाड़ रखा है काफी हद तक अपनी तरफ से माओइस्ट रीजन का। अब देखा जाए तो सिंस दे आर द स्टेट पुलिस, उनको ज्यादा अच्छी समझ होगी उस इलाके की, लेकिन तब भी जो है उन्होंने अपनी तरफ से काफी हद तक जो है, बिल्कुल नहीं बट कहां काफी हद तक पल्ला झाड़ के रखा हुआ है और सारी जिम्मेदारी जो है वो अल्टीमेटली सारा प्रेशर डाल दिया है सीआरपीएफ के ऊपर, जिसकी वजह से भी सीआरपीएफ इज सफरिंग अ लॉट। सो द स्टेट पुलिस ऑफ छत्तीसगढ़ एक्चुअली इट हैज व्हाट यू से, it has almost left away its duties, it has actually abdicated or left its parts towards maintaining law and order in such Maoist regions, and actually it has converted all the pressure on the CRPF as well। ठीक है भाई, तो आई होप कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर। द सेंटर नीड्स टू अर्जेंटली पुट इन प्लेस इन मिशन मोड मेजर्स टू स्ट्रेंथन, एक्सपैंड एंड आर्म द स्टेट पुलिस, मोस्ट ऑफ ऑल इन छत्तीसगढ़। बेसिकली जो केंद्र की सरकार है, जो होम मिनिस्ट्री है,
वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अल्टीमेटली जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं वो सिर्फ निंदा करना बंद करें और कुछ एक्शन करना भी शुरू करें। साथ ही में जो भी स्टेट पुलिस है, खास करके बेसिकली जो माओइस्ट हिट इलाके हैं, जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, इसकी जो वेपनरी है इसको अपग्रेड किया जाए और साथ ही में उनको बेसिकली बिल्कुल अच्छे से कह सकते हैं आप, एक तो उसका जो पुलिस फोर्स है उसका एक्सपेंशन करें एक बड़े लेवल पर और साथ ही में अच्छे से उनको सभी हथियार भी प्रोवाइड किए जाए। सो द सेंटर नीड्स टू अर्जेंटली पुट इन प्लेस it needs to urgently put in place in mission mode and war mode measures to strengthen, to empower, expand, increase in size and arm the state police, and most of all importantly in Chhattisgarh. Well, this needs the state governments to show more political will to persuade or follow local communities than they currently do. तो अल्टीमेटली साथ ही में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको भी थोड़ी पॉलिटिकल विल दिखानी पड़ेगी अपना वोट बैंक के बारे में छोड़ करके। साथ ही में अल्टीमेटली तो और इनफैक्ट उनको ऐसे स्टेप्स लेने होंगे कि वो लोकल कम्युनिटीज जो यहां से कह सकते हैं आप जो कि फीडिंग ग्राउंड है इन माओइस्ट के लिए, वो लोकल कम्युनिटीज माओइस्ट की ना सुन करके इनकी सुनना स्टार्ट करे और इनको फॉलो करना स्टार्ट करे। सो एक्चुअली द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो नीड टू डू देयर पार्ट एंड व्हाट दे एक्चुअली नीड to make sure that the local communities start following them and let go of the Maoist. Okay भाई, चलो भाई अब आगे देखते हैं। Well, the Maoists long ago lost their argument with their murderous ways, but the political and civil establishment is yet to win the argument by to win that argument by addressing the people's security and welfare needs and their concerns about extractive or removal of state policies. तो भाई देखा जाए अल्टीमेटली तो ऑब्वियस है कि माओइस्ट पहले कहते थे कि भाई हम तो जो है ये चाहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है सही सलामत रहे, जो बेसिकली गांव के लोग हैं वो सही सलामत रहे, लेकिन अल्टीमेटली इस काम के लिए उनको इतनी बेदर्दी से और बेरहमी से जो है किसी को मारने की जरूरत नहीं। तो अल्टीमेटली कुछ नहीं है, वो जो भी कह रहे हैं दे आर टोटली स्टूपिड्स एंड दे आर जस्ट स्प्रेडिंग ब्लडी नॉनसेंस एंड दे डिजर्व्ड टू बी शॉट इन दी हेड एज सून एज पॉसिबल। ठीक है भाई, तो देखा जाए तो उनकी अपनी जो वो लॉजिक को सामने रख रहे थे वो बिल्कुल पूरा छलावा है, ऐसा कुछ नहीं चाहते। दे जस्ट वांट टू कीप द पावर इन देयर ओन हैंड्स, दैट्स द ओनली ब्लडी थिंग दैट दे वांट। एंड अल्टीमेटली देखा जाए साथ ही में तो स्टेट गवर्नमेंट को जो है कनेक्ट बनाना पड़ेगा सो दैट द पीपल हु आर एक्चुअली बिहाइंड द माओइस्ट दे लेट गो ऑफ द माओइस्ट एंड दे कम बिहाइंड द पीपल ऑफ देन दे कम बिहाइंड द स्टेट गवर्नमेंट। और इसके लिए द स्टेट हैज टू इंश्योर, स्टेट को बेसिकली इंश्योर करना पड़ेगा, ऐसा करना बेसिकली उनको कह सकते हैं आप कि लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड ढंग से करनी पड़ेगी, साथ ही में जो भी लोग रिक्वायर्ड करते हैं वहां पे जो भी उनकी जरूरतें हैं उनको भी पूरी तरीके से पूरा करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली so the people, by the way, so the people who are actually behind the Maoists, they need to be behind the state government, and that can only be possible when the state government is ready to provide all the welfare needs of those people, and it's ready to provide the security and the establishment to such people. And you know what? And these Maoists who have been totally spreading lies and still have, even in our political circles, a lot of stupids are there. And in fact, in the national capital as well, we have a lot of stupid universities like that, where people, spending their entire college time, in fact, spending their entire lifetime doing nothing but stupid acts, deserve to be shot in the head, because that is the actual thing that they deserve. I'm not a really fan of Azadi gang, but still, I think they seriously need medicine, and that medicine is 7.65 mm, and that should go right here. Now, let's take a look at the parajumble, and here it comes for you. So my dear friends, आपके पास है 90 seconds and your time starts now. No need of the timer. I'll count the time for you. Come on. "75 seconds, guys. Hurry up. Arrange it." Just 60 seconds more, quickly. Okay, now 45 seconds more, guys, hurry up.
Well, last 30 seconds, guys, quickly. What's the answer? Now, EADCFB says Anushka. Okay. And that's Anushka Sharma. Okay. Well, EADCFB says Rahul Kumar. All right, that's very good. Now, EADCFB says Aarti Tomar. ECDFAB says Surabhi. Come on, guys, 10 seconds more. Hurry up, quickly. ओके सो थैंक यू बाय द वे। तो यहां पर देखा जाए तो मैं देख सकता हूं बहुत सारे जवाब आ रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल हैव बीन एबल टू गेट द अरेंजमेंट्स। नाउ सम पीपल आर आल्सो आस्किंग वेदर दे आर लेट। वेल माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन एनीवे, एंड देन वील स्टिल हैव वन मोर आर्टिकल, सो यू आर नॉट दैट लेट। तो भाई देखा जाए तो अब नाउ इट्स टाइम टू टेक अ लुक एट द करेक्ट पैराजंबल, एंड हियर कम्स द करेक्ट ऑर्डर। Well, the correct order is EADCFB. The correct order is EADCFB. तो क्या है सही ऑर्डर? ये है EADCFB. Now, my dear friends, अब देखो भाई, तो जो सही जो पहला स्टेटमेंट है यहां पर, it may have had no bearing on the attack or the probability of averting it, but the fact that the post of the Director General of the CRPF continues to be vacant, totally empty, is actually a lapse amplified by the tragedy, and the inadequacies are more grave than this administrative oversight, by the way. Then the state police forces in the Maoist affected areas have more or less abdicated their duties of law and order, leaving the job almost entirely to the paramilitary forces. So my dear friends, so that is the correct order. I hope कि आप लोगों ने सही यहाँ पर दे दिया होगा जवाब, and your answer is also correct. And by the way, if you gave a correct answer, you got 1 minute for this particular thing, and sorry, you got 1 marks for this particular order. और जो आपका total score है, that has gone up to 3 of 3 for sure. And if it's not 3 of 3, even 2 of 3 is also a pretty good score. अब देखा जाए तो जो भी लोग आधा अरेंजमेंट सही कर पाते हैं, यानी कि let's just say that all those of you who were able to get 4 statements correct, even you can give yourselves half marks as well. ठीक है भाई, तो चलो आगे बढ़ते हैं. Let's take a look at the next article now, my dear friends. It's up to you to go back and rewrite that particular article, और मुझको उसकी समरी भेज दीजिएगा मेरी मेल आईडी पर, which is saurabh.day@adda247.com. Now, a call for reform. Well, my dear friends, now this is actually a financial article, ठीक है, and this is regarding the IMF. ठीक है भाई, तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये उसके ऊपर बेस्ड आर्टिकल है, फाइनेंशियल आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. सो लेट्स टेक अ लुक व्हाट एक्चुअली इज रिटन इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. Now, Finance Minister Arun Jaitley has demanded reforms to the International Monetary Fund's controversial quota system, shedding light or clarifying the problems facing the Bretton Woods Institute in today's global economy. अब देखो क्या है ना, देखो भाई IMF जो है, कह सकते हो आप, IMF बेसिकली कह सकते हो, मान सकते हो कि ये बहुत जो है मतलब एक मम्मी के जैसे है. ठीक है भाई, तो बाकी के मतलब जो कंट्रीज हैं उनके लिए पैसे वाली जो मम्मी है वो IMF है. ठीक है, तो IMF क्या करती है, जब भी अपने बच्चों को, यानी कि बाकी कंट्रीज है, जब मेंबर कंट्रीज है, जब भी अपने बच्चों को जो है पैसे की जरूरत पड़ती है, तो अल्टीमेटली वो उनको पैसा प्रोवाइड कर देती है. ठीक है भाई, तो आप ऐसे समझो. तो अरुण जेटली जी जो है, अब देखो क्या है ना, मम्मी ने क्या है, यानी कि नाउ व्हेनेवर आई से मम्मी ओवर हियर, अपनी मम्मी को मत बुलाना. ठीक है, जस्ट थिंक ऑफ IMF. तो यहां पर देखो क्या है, यहां पर जो पैसे वाली मम्मी जो कि IMF है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बनाया हुआ है कोटा सिस्टम. ठीक है, तो कोटा सिस्टम क्या है, यहां पर अल्टीमेटली अलग अलग बच्चे को, यानी कि अलग अलग मेंबर कंट्री को उसके साइज के हिसाब से पैसा दिया जाएगा. ठीक है, मतलब समझ लो, यानी कि जो क्लास 5 में है या छोटी डेवलपिंग कंट्री है उसको अल्टीमेटली अमाउंट पर्टिकुलर पैसा, जो क्लास 7th में है उससे बड़ी डेवलपिंग कंट्री है उसको पर्टिकुलर पैसा. ठीक है, तो मतलब ऐसे करके बनाया हुआ है कोटा सिस्टम. ठीक, तो अब देखा जाए तो अल्टीमेटली तो जिस तरीके का ये कोटा सिस्टम बना हुआ है ना भाई, देखा जाए तो ये जो कोटा सिस्टम है इसमें बदलाव की जरूरत है. यही अरुण जेटली साहब मम्मी जी से, यानी कि IMF से कहने गए थे. Now, so the finance minister Arun Jaitley, by the way, he has demanded reforms and transformation in the quota system of the IMF. Actually, this is the quota system which the IMF follows while giving or providing funds to the various countries. Now, quotas determine the size of contingency funds for financial emergency at the disposal of the IMF to lend to countries in need of help, as well as the power of individual countries to influence lending decisions and tap into the funds themselves. वो क्या है ना
भाई अक्सर ऐसा होता है कि अगर मान लो मल्टीपल बच्चे हो रखे होते हैं किसी मम्मी के, तो ऑब्वियस होता है कि मम्मी कहती तो यही है कि मतलब नहीं तुम जितने भी हो सब बहुत प्यारे हो, लेकिन उनमें से एक ना एक तो कुछ ज्यादा ही खास होता है मम्मी का, ठीक है। तो इसलिए कई बार ऐसा भी होता है, लेट्स जस्ट से ये अल्टीमेटली जब भी मतलब वो जब बोले मम्मी मेरे को इतना पैसा चाहिए, स्कूल की फीस भरनी है, लो बेटा जाओ जे जाओ, ठीक है। तो फिर आधा मान लो अरे मम्मी मेरे को एक शर्ट अच्छी लग गई तो मुझे उसके लिए इतना पैसा चाहिए, दे दो प्लीज, तो उसको मिल गया, ठीक है जाओ बेटा जाओ खरीद लो। अब देखा जाए तो वैसे ही, लेकिन ये जो सिस्टम है ना बहुत कम ही ऐसा होता है कि सब बच्चों के साथ बराबर होता है। तो वैसे ही मान लो वही सेम मम्मी का जो दूसरा बच्चा है वो बोले मम्मी स्कूल की फीस भरनी है, तो तुरंत मम्मी बोलेंगी क्यों, जो पिछली बार फीस के पैसे दिए थे वो तुमने बचाए नहीं है, क्यों नहीं बचाए, उससे तुम जाओ अपनी फीस दे दो, थोड़ा सा पैसा और लो और जाओ उससे दे दो। मतलब एक बच्चे को तो एकदम खुल्लम खुल्ला छूट, भैया लो भैया तुम फीस भी भरो, लो तुम शर्ट भी खरीदो, जो चाहो वो खरीदो। लेकिन जो दूसरा वाला बच्चा है उसको बेचारे को फीस के लिए भी बहुत ज्यादा किल्लत झेलनी पड़ती है। तो भाई देखा जाए तो कुछ वैसा ही होता है यहाँ पर। तो अब देखो क्या है ना, जो डेवलपिंग कंट्रीज है इस कोटा सिस्टम से उनको पैसा मिलता है उनकी जरूरत के हिसाब से, और साथ ही में कई बार ऐसा भी होता है जिस कंट्री का जितना ज्यादा भौकाल होता है उसको उतना ज्यादा पैसा मिल सकता है अपने किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल काम के लिए, so by the way, the amount actually that we actually get provided to various countries is actually done through a quota system that is followed at the IMF, and primarily this quota system is used by the developing countries, to let's just say when they come actually in a financial emergency, then the IMF lends them the amount. But many a time it has been seen that even when the countries want the amount for some sort of a investment at some particular place, they can still get some of them still get the point, some of them still get the money from the IMF while others can't. Now I hope my dear friends ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। Now अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। दो डेवलपिंग कंट्रीज होल्ड लेस देन हाफ द ओवरऑल कोटा एट द मोमेंट, विद देयर रैपिडली इंक्रीजिंग इकोनॉमिक हेफ्ट और कैपेसिटी दे हैव डिमांडेड एट अ ग्रेटर शेयर विद लिमिटेड सक्सेस। अब देखो क्या होता है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं अल्टीमेटली तो ऐसा कम ही होता है कि उनको जो है पैसा ज्यादा मिले बड़े बच्चों के कंपैरिजन में, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल अल्टीमेटली आई हैव आई हैव एल्डर सिस्टर्स, तो मैंने हमेशा देखा बचपन से कि दे गॉट मोर मनी, and when I asked the same amount for logical reasons I got less, and but yes I did get scolded to get the balance equal. Anyways अब देखा जाए भाई क्या होता है, भाई ऑब्वियसली मेरी भी बड़ी सिस्टर है, तो ऐसा मैंने देखा है कि जब भी मेरी बड़ी सिस्टर कोई पर्टिकुलर अमाउंट मांगती थी कि भाई उनको कुछ खरीदना है, तो शी वॉज गिवन लो बेटा जाओ, ना बेटा नहीं ना। और जब मेरी बारी आती थी तो हमको वो अमाउंट तो नहीं मिलता था, लेकिन हाँ उतने अमाउंट की जो है झापड़ और डांट जरूर मिल जाती थी, ठीक है भाई। तो कुछ वैसा ही होता है जो डेवलपिंग कंट्रीज है। अब देखो क्या है ना, डेवलपिंग कंट्रीज धीरे धीरे बेचारी डेवलप हो रही हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो देखा जाए तो उनको कोटा सिस्टम में रखा गया कि तुमको इतना पैसा ही मिलेगा, इतने ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन वो धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं तो वो बार बार IMF से मांगती रहती है, अरे मम्मी मेरे को पैसा दे दो, मुझको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, अरे मम्मी पैसा दे दो, मुझको ये करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है और मम्मी बार बार जो है उनको मना कर देती हैं। Now, so ultimately, so the IMF, by the way, see the thing is that it keeps on denying the request from primarily developing countries, because the quota of the developing countries is really small as far as the fund allocation is concerned, so that's why, so the developing countries keep on requesting for amounts for various things, but still they are not actually, they don't get away with their demands, and the IMF doesn't quite listen to it every time they ask for things. Now, in this context, speaking at the spring meetings of the IMF, Mr. Jaitley reiterated or repeated the need to reform the quota system further, else he warned the legitimacy and credibility of the IMF could be eroded or destroyed. अब देखा जाए अल्टीमेटली भाई तो जेटली साहब जो थे उन्होंने कहा कि देखो भाई IMF मम्मी जी आप ऐसा काम नहीं कर सकती हैं और आपको अपने कोटा सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा, वरना अगर आप बदलाव नहीं करोगी तो हो सकता है जो आपका जो महत्व है वो थोड़ा कम हो जाए, और हो सकता है यानी कि हम कुछ और तरीके निकाल ले, जैसे कि मतलब मान लो सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जेटली जी ये कह रहे हैं कि देखो ऐसा है मम्मी, ऐसा है IMF, पैसा देना शुरू कर दो हमको, हम जो इनफैक्ट हमको ही क्या जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको शराफत से अपना कोटा सिस्टम सही कर लो, वरना तुम्हारा असर जो है वो कम हो जाएगा। So Mr. Jaitley, by the way, repeated his points that the
quota system of the IMF needs transformation and it needs reforms, else the effectiveness and the importance of IMF might get reduced for sure. Well, the 15th General Review of Quota, the most recent attempt to revise the size and composition of the system, was to be completed by October 2017, but the deadline has now been extended to 2019. अब देखा जाए तो जनरल रिव्यू ऑफ कोटास जो होता है ना, ये बेसिकली देखो क्या है ना, इसमें क्या होता है कि अलग अलग जो कंट्रीज होती हैं वो मतलब जैसे कि मान लो कि डेवलपिंग कंट्री है तो उसको कितना पैसा मिल सकता है, मतलब कह सकते हो आप बजट कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो कोटे वाला जो बजट है ना, 15वां कोटे वाला जो बजट था अल्टीमेटली विच इज कॉल्ड जनरल रिव्यू ऑफ कोटास, ये होने वाला था इसी साल में अक्टूबर में, मेरे बर्थडे वाले मंथ में, लेकिन अफसोस वो आगे जाके एक्सटेंड कर दिया गया और अब वो होगा 2019 में, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। सो द 15th जनरल रिव्यू कोटा बाय द वे, which in which the quotas get decided of the various countries, what actually to be done actually it has to be completed this year in October, but it got extended. It has now been extended to 2019. I hope my dear friends that ये बढ़िया से जो है समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो अच्छे समझ में ले आओ भाई, एग्जाम है, समझा करो। Now let's take a look at the next question and here it comes. Okay, so which of the following is not true according to the passage, my dear friends? You got 3 statements and you have to tell me which of the following is not true. Your time starts now. Hurry up guys, timer is on. Come on guys, time is passing. Last 10 seconds quickly, what's the answer? तो भाई वो कहते हैं ना, एक्चुअली ओरिजिनली यही था कि लेजेंड्स आर बोर्न इन अक्टूबर, लेकिन अब बाकी के लोगों ने भी चुरा लिया है, तो कोई बात नहीं, अक्टूबर पीपल आर जस्ट लाइक इट्स ओके गाइस, यू कैन जस्ट टेक इट एंड हैंडल इट एनीवे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू पैसेज? तो सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा पूछा गया था? स्टेटमेंट ए में देखो दिया हुआ है, कोटास हार्डली डिटरमिन द साइज ऑफ कंटिजेंसी फंड्स आर द डिस्पोजल ऑफ द IMF टू लेंड टू कंट्रीज इन नीड ऑफ हेल्प। ठीक है भाई, यानी कि क्या ऐसा बोला गया था पिछले वाले स्लाइड में? मुझे तो नहीं लगता, यानी कि ए तो जो है गड़बड़ है, ये असत्य किस्म का लग रहा है। अब आगे देख लेते हैं। नाउ इन बी इट्स गिवन, though developing countries hold less than half the overall quota at the moment, with their rapidly increasing economic heft or capacity, they have demanded a greater share with limited success. Well, my dear friends, yes, this seems to be true given the content of the previous slide. Now, statement C says, the 15th General Review of Quotes, the GRQ, the most recent attempt to revise the size of and composition of the system was to be completed by October 2017. Well, my dear friends, yes, this was also true given the previous slide, given the content of the previous slide, which means only A is actually not true. तो basically जो सही जवाब है वो क्या है? वो है only A. केवल A ही ऐसा है जो कि सत्य नहीं है my dear friends, which means all those of you who have been typing 11111, you have actually won and that is the correct answer. This increases your score to 4 of 4 for sure, and if it's not 4 of 4, even 3 of 4 is also a pretty cool score. I can see a lot of people who have joined us recently, even they are scoring really very well. ठीक है भाई, चलो अब हम लोग देखते हैं next one. Now let's take a look at the next part please. Well, the delay was not unexpected given the poor precedent or standards set by the long delay in adoption in 2016 of the previous GRQ, originally approved in 2010. अब देखा जाए भाई तो अभी जिस कोटे से हमको यानी कि हमारे देश को पैसा मिल रहा है वो बेसिकली कोटा ऐसा है जो कि 2010 में आना चाहिए था, लेकिन अब जाके 2000 साल मतलब बेसिकली पिछले साल ही वो GRQ अप्लाई हुआ है। तो समझ लो, अगर मान लो कहीं अगर पे कमीशन जो है मान लो अगर डिले हो जाए तो कितना बवाल कर डालते हैं हमारे यहाँ जितने भी यूनियन वाले हैं। एनीवेज, तो देखा जाए तो वैसे ही तो ये कोटा जो सिस्टम था जो कि रिफॉर्म इनफैक्ट रिफॉर्म्स लाने वाला था बेसिकली अलग अलग कंट्रीज को पैसा प्रोवाइड करने के बारे में, तो ये वही देखा जाए तो जो 2010 में होना था वो 6 साल डिले होकर के लास्ट ईयर हुआ। तो इसी कारण जो है वो जो अक्टूबर वाला था वो अब बढ़ करके मतलब अक्टूबर दिस ईयर जो था वो बढ़ करके 2019 तक पहुंच गया है। तो यानी कि दिस हैज बीन देयर।
So the delay actually, the initial delay of the 15th GRQ from October 17 to 2019, actually, this is not something that happened for the first time or it was unexpected. This is just you can say this is actually a second time, in fact, another time, the poor standards set by the previous delay, it's happening again. So primarily, the 14th GRQ was supposed to be in place by 2010, but it was only in place by 2016 last year. Hence, the 15th GRQ got postponed once again from 2017 to 2019. Okay, well, that had doubled the overall size, the quotas, to $659 billion from $329 billion, while allowing an additional 6% of quotas to the developing world. अब देखा जाए भाई तो जो पिछला जो इनफैक्ट जो कोटा सिस्टम बना हुआ था, इनफैक्ट ये जो आपके जो अभी चल रहा है कोटा, जो जीआरक्यू वाला जो अभी चल रहा है, उसका जो इनफैक्ट कह सकते हो आप, तो उसका जो कोटा जो सिस्टम है, जो उसकी वर्थ है, वो $659 बिलियन की है अल्टीमेटली। और साथ ही में जो उससे पहले $329 बिलियन की हुआ करती थी, और साथ ही में भाई कह सकते हैं 6% एडिशनल कोटा मिलेगा जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको। ठीक है भाई। सो द इनिशियल द थिंग इज व्हाट, बिफोर 2010, in fact before the 14th GRQ, the actual worth of the quota was at $329 billion, but after the 14th GRQ got applied, now the quota worth is at $659 billion, and an additional 6% of the quotas has been given, provided to the developing world. But with the rise of competing global institutions ready to meet the capital needs of the developing world, the patience of countries such as India may be tested more easily. अब देखो भाई क्या चीज है ना, अक्सर ऐसा होता है कि भाई मम्मी कई बार ऐसा थोड़ा कंजूसी दिखा देती है कि भाई आपको अमाउंट नहीं मिलेगा, आप जाइए कहीं से, मतलब आप वैसा वेस्ट कर दोगे, ऐसा वैसा, मतलब ऐसा वैसा बोल के जो है मम्मी जो है टरका देती हैं अक्सर। तो उसमें होता क्या है, उसमें ऑप्शन ये होता है, लेट अस एक्सप्लोर द ऑप्शन। तो ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ फूफा, मौसा मौसी, मामा मामी, है ना, तो ये बाकी के दूसरे संगठन माने जा सकते हैं जहां से हम पैसा ले सकते हैं अगर मम्मी जो है मना कर दे। सो अल्टीमेटली तो कुछ ऐसा ही यहां बताया जा रहा है, समझा जा रहा है कि अगर इंडिया को जो एक्चुअल मम्मी है पैसे वाली IMF, अगर इससे पैसा नहीं मिलता है तो जो बाकी के संगठन हैं उनकी तरफ जो है शायद जाना पड़ सकता है, बाय द वे। सो now what actually is being conveyed over here is that, see, if IMF is not able to transform its quota system, if it's not able to transform the delivery system of money, then other institutions can actually come forward to cater to the demand of the developing world. I hope इतना बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। Now, so also at stake, and also at stake is the potency or the effectiveness of IMF in keeping up of maintaining with the changed fundamental needs of developing economies. भाई पूछ ले भाई, पहले क्या है ना, जो डेवलपिंग देश थे उनकी जो डिमांड्स थे, उनके जो इनफैक्ट उनकी जो कह सकते हैं आप जो भी डिमांड्स थे, जो भी रिक्वायरमेंट्स थे, वो अलग किस्म के थे। लेकिन अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका अल्टीमेटली जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरतें हैं, वो अलग किस्म के हो चुके हैं, और इसीलिए तो इनफैक्ट जो लगातार डिमांड ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं, IMF को जो है अपने आप को जो है अपग्रेड करना पड़ेगा और मॉडर्न तरीके से जो है अपने आप को जो है साथ ही में कह सकते हैं आप बिल्कुल रफ्तार के साथ बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज जो है जो ये मामा मामी और फूफा फूफी हैं, इनका जो असर है ना वो बढ़ सकता है, और मम्मी का जो असर है यहाँ पर उनका बिल्कुल घट सकता है। So also at stake over here is actually the effectiveness of IMF, which might get totally diluted if it is not able to transform itself considering the changes and the requirements of the modern world. Well, the developing world is looking beyond the short-term crisis management tools at the IMF as the sole international lender of last resort, has traditionally offered them for decades now, albeit in an unsatisfactory and politically biased way. अब देखा जाए अल्टीमेटली, यानी कि जो पैसे वाली मम्मी है IMF, उन्होंने जो है देखा जाए तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में जब एकदम कह सकते हो, और मतलब बिना पैसे लिए जब मतलब डेली बच्चा बवाल करे कि नहीं मम्मी ने हमको पैसा नहीं दिया, भैया ज्यादा पैसा दे दिया या दीदी ज्यादा पैसा दे दिया, मतलब डेली बवाल कर करके जब और पैसे मम्मी नहीं झेल पाती हैं तभी जो है ले जा, मतलब पहले एक तमाचा मारती है फिर खोपड़ी मार देती है, पैसा ले जा, ठीक है भाई। तो अल्टीमेटली इस तरीके का जो व्यवहार है वो पैसे ले मम्मी जो है बहुत टाइम से करती आ रही है, और इसीलिए अपना मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, मतलब भाई बच्चों का भी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, हर किसी का होता है, तो भाई ऑब्वियस है,
तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ इज्जत को देखते हुए भाई कि ऐसे बार बार फालूदा नहीं किया जा सकता है, मम्मी से बार बार पिटा नहीं जा सकता है, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए कुछ और हमको मतलब इंतजाम करना पड़ेगा चाचा चाची ताऊ ताई से, तो मतलब ऐसा सोच सकते हैं बच्चे, यू नो. सो अल्टीमेटली द डेवलपिंग कंट्रीज कैन थिंक ऑफ हैविंग सम अदर काइंड ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिसोर्स इफ द शॉर्ट टर्म वेज ऑफ द IMF don't really cater to their needs anymore. Now my dear friends, let's take a look at the next question, and here it comes for you. So question number 5 for you is right here. What can be the suitable theme for the passage? Your time starts now. Come on guys, hurry up. Timer's on. Come on guys, hurry up. 20 seconds. Quickly, come on. भाई समय एक बार फिर से समाप्त हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो घड़ी है लगातार देखो बार बार आपका समय समाप्त किए जा रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है बिल्कुल इस घड़ी भाई साहब से जो है अल्टीमेटली कह सकते हैं आप आगे ही चल रहे हैं और से जवाब दे भी दे रहे हैं, हालांकि अभी तक गायब हो चुके होंगे. एनीवे, सो व्हाट कैन बी द सुटेबल थीम फॉर द पैसेज? वेल, स्टेटमेंट ऑप्शन 1 इज ट्रांसफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड. वेल, ट्रांसफॉर्मेशन तो काफी आ रहा है, बट नॉट ओनली इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड, इन एवरी अदर टर्म. देन कह सकते हैं आप चैलेंजेस फेस्ड बाय द IMF. सो अल्टीमेटली देखा जाए तो जो पूरा पैसेज है अभी तक तो वो पैसे वाले मम्मी और IMF के आसपास ही घूम रहा है. सो ऑप्शन नंबर 2 is actually the primary contender for the answer over here. Option number 3 is Mr. Jaitley's demand. Yes, Mr. Jaitley have been demanding and he has been used in some of the slides. Well, dealing with developing countries, बिल्कुल, तो dealing with developing countries की तो बात कही गई ही है, लेकिन from IMF point of view से कही गई है, और इसीलिए IMF, the second option might just edge the fourth option. Now, option number 5 is IMF versus WTO. Well, अभी तक जो है WTO की कोई बात नहीं उठी है, and that means, my dear friends, all those of you who actually chose option number 2, challenges faced by IMF, you have done a good job because that is the correct answer. Now I can see the majority over here, by the way, had gone with option number 4. My dear friends, you need to focus at the central theme. ठीक है, जब भी हम बोलते हैं ना what can be the suitable theme for the passage, तब हम बात करते हैं actually it's about the central theme, and central theme actually is IMF over here and how IMF has been dealing with the developing countries and blah blah blah. ठीक है, तो इसलिए जो central theme है, जो central focus है, जो central main point है आपके पैसेज का, उसको लगाया करो आंसर ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस में. ठीक है, and that's why, my dear friends, the correct answer over here is option number 2, challenges faced by the IMF. Now let's take a look at the next part, by the way, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से आज एडिटोरियल हेडिंग्स और इंपॉर्टेंट है. Now next part please. So China, for instance, with its steadily rising influence on the global economy, has grown to be the focal point or the central point for economies seeking alternative sources of capital to fund their long-term growth needs. अब देखा जाए भाई तो चाइना एक ऐसा बच्चा निकला है जो पैसे वाले मम्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि चाइना को देखा ऐसा लगा कि देखो यार, आई एम गेटिंग टोटली ऐसे नहीं, आई एम गेटिंग टोटली मॉडर्नाइज्ड, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मुझको अलग अलग चीज़ें करनी है, तो मेरे को चाचा चाची ताऊ ताई और मामा से पैसे लेने पड़ेंगे. ठीक है, मतलब अल्टीमेटली सो दे आर लाइक दैट. तो जो ये चाइना वाले हैं, मतलब ये अपनी नन्ही मुन्नी आंखों से भाई तो पैसे वाली मम्मी के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है. ये जहां से इनको पॉसिबल होता है ये वहां से अपने लिए फंड्स मुहैया करवा लेते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स को लेकर चलते हैं और लगातार लॉन्ग टर्म पे जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपना ग्रोथ लगातार बनाते रहते हैं. So, China, for example, for instance, with its continuously rising influence on the global economy, it has been able to get the money whenever it wants, considering the long-term growth needs that is actually required. In fact, this month, Mr. Jaitley announced that India is seeking $2 billion from the new development bank set up by BRICS countries in 2015 with a more equitable power structure to fund infrastructure projects. Now, the Asian Infrastructure Investment Bank, launched in 2014, could be an even bigger threat to IMF influence.
given its larger membership, lending capacity and international reach। और देखा जाए अल्टीमेटली तो जेटली जी वहां पर बोल के आ चुके हैं कि देखो ऐसा पैसा मम्मी तुमको पैसा नहीं देती हो, बस जान लो ताऊ जी जो है ना, तुम्हारे जो ताऊ जी है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उनसे हम $2 बिलियन ले लिए हैं, समझी कि नहीं। और अल्टीमेटली वो ब्रिक्स कंट्री से सेटअप किया था, और साथ ही में जो ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चरल अब जो बैंक है, मतलब कह सकते हो जो AIIB, इनफैक्ट जो AIIB जो है, जो कि 2014 में लॉन्च हुआ था, इसके ज्यादा मेंबर भी है, इसके ज्यादा पैसा भी है। तो अगर तुम हमको ढंग से पैसे नहीं दोगी ना, तो हम इससे भी पैसा ले लेंगे और बाकियों को भी बोलेंगे तुम लोग भी है पैसा लो, पैसे मम्मी से पैसा मत लो, ठीक है। वो एकदम बिल्कुल गंदी मम्मी है, एकदम पैसा तो नहीं देती हमको। सो अल्टीमेटली जेटली साहब ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि $2 बिलियन देखो हम ले चुके हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक से, जो कि ब्रिक्स ने बनाया था। और साथ ही में इनफैक्ट देखो एक चीज यहां बहुत क्लियर है कि अगर IMF ने अपनी चीजों को नहीं सुधारा, अगर अपने कोटा सिस्टम को ट्रांसफॉर्म नहीं किया, तो AIIB सबसे बड़ा यहां पर देखा जाए तो भाई सबसे बड़ा कंटेंडर है, सबसे बड़ा चैलेंज है पैसे मम्मी के लिए। और इनफैक्ट अब देखो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादा मेंबर्स भी हैं AIIB के, साथ ही में जो कैपेसिटी है, जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो भी ज्यादा है, और इंटरनेशनल रीच जो है ना वो भी ज्यादा है इनफैक्ट आपका AIIB का। So ultimately, by the way, this month Mr. Jaitley clearly announced, and in fact it was more of a challenge by the way, Mr. Jaitley actually clearly announced that it is seeking $2 billion from the new development bank, which has been set up by BRICS countries, which actually includes India, in 2015 with a more equitable and a more equal power state of structure। मतलब साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जैसे तुम जो है तुम बड़े भैया ज्यादा पैसा देती हो, हमको कम देती हो, ऐसा नहीं होता है। वहां पर बेसिकली जो ये बनाया हुआ है नया न्यू डेवलपमेंट बैंक, वहां पर क्या होता है सबको बराबर पैसा मिलता है, so ultimately the power structure is quite equal at the new development bank, and that is why to fund infrastructure projects India has sought $2 billion from the new development bank. And actually in fact the AIIB can be a real challenge to the IMF guys, by the way, because given the larger membership of AIIB, lending capacity of AIIB and the international reach of AIIB. Now in this environment of competition, the IMF will have to do more than just superficially tinker or repair with its asymmetrical or unidentical power structure and outdated quota system। अब देखा जाए अल्टीमेटली तो पैसे वाली मम्मी को सोचना पड़ेगा कि भाई कैसे सब कुछ मामला ठीक किया जाए, और एक्चुअली प्रैक्टिकली मतलब दिखा के सोचना पड़ेगा, ये नहीं कि बस बोल रही हैं ठीक है हम सोच रहे हैं कैसे सही किया जाए पैसा। और जो जिस लॉजिक से वो पैसा दे देती हैं कि मतलब बड़के भैया को एकदम सीधे 5 लो बेटा तुम 50,000 ले जाओ, और छोटे भाई को सीधे 50 रुपए बहुत हो गया, 50 रुपए बस भग यहाँ से। तो मतलब इस तरीके से जो ट्रीटमेंट कर रही है अनइक्वल इलॉजिकल वाला, तो इसको भी सही करना पड़ेगा IMF को, बिकॉज ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है भाई। तो दैट्स व्हाई द IMF नीड्स टू रिपेयर इट्स वेज, and that's the case, and that is why the IMF needs to repair its case, and actually practically it needs to repair, and the illogical power structure needs to be updated, and it needs to be modernized, and it needs to be made equitable. Well, meanwhile it remains to be seen whether India will continue to push for reforms at the IMF, even as it simultaneously seeks to diversify its funding base, or whether it will assume a bolder stance in openly favoring one over the other। भाई देखने वाली बात ये होगी, क्या इंडिया जो है वो अभी भी इस पैसे वाले मम्मी के आसपास चक्कर काटता रहता है, या फिर जो बाकी के ताऊ जी और ताई जी और मामा जी और चाची जी और चाचा जी जो है, मतलब जो बाकी के दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां से थोड़ा मतलब गठबंधन बढ़िया करता है और वहां से जो है जो भी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा है वो जुटा पाता है कि नहीं, या फिर मतलब वाइस वर्सा। So by the way, the eyes will be actually on India over here, whether it continues to push for reforms and changes at the IMF and keeps on, coming around IMF, or, it goes away. It can goes, or rather, India goes away with some other organizations to meet whatever its requirements have been there। ठीक है, तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स कि आपको ये जो पूरा आर्टिकल था ये बढ़िया से समझ आ गया होगा और आपने बढ़िया से एंजॉय भी किया होगा। तो अगर एंजॉय भी किया है तो आप लिख सकते हो बढ़िया से बैठ गया सर। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट all the other headings that actually were there in today's The Hindu editorial, and they were actually very important as well. And here are the headings. Next slide please.
So other articles for review, by the way, जो कि आपको खुद से review करना होगा. It has to be a personal review. Hedging bets as Trump scouts for deals, you know. So ultimately ये जो है आप समझ सकते हो Donald Trump के बारे में है और साथ ही में now this is actually a diplomatic article regarding India, Trump, etc. So that's why this particular article is pretty important from from diplomatic point of view. Then the expanding universe of IP. तो देखा जाए तो कुछ कह सकते हो आप मेडिसिन का कुछ नेक्सस बनता हुआ दिख रहा है आईपी के कंसर्न में, भाई आईपी के साथ साथ आईपी के कंसर्न्स में. सो दैट्स व्हाई इंटरनेट प्रोवाइडर के बेसिस पे ये एक अच्छा आर्टिकल है एंड आई थिंक यू गाइज मस्ट गो थ्रू दिस फॉर श्योर. देन ऑन ट्राइबल्स एंड टाइगर्स, वेल माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज रिगार्डिंग द पीपल हु लिव इन टाइगर सेंचुरीज, सो उनसे उनके साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है, व्हाट एक्चुअली इज द बिहेवियर दैट हैज बीन that actually is being meted out to the tribals who live in tiger sanctuaries and other important areas. So this is also a pretty important article from environmental point of view. So that was all, my dear friends, in this session of the Hindu editorial. I hope that you guys actually enjoyed the session a lot. और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि भाई देखा जाए तो this will be all and thank you. लेकिन हाँ, एक और चीज my dear friends, tomorrow we are going to have a T20 special of error detection. बिल्कुल, तो कल याद रहे 3 बजे जो है बिल्कुल आ जाना 247 में. इनफैक्ट कल तो आप रहना ही है आपको पूरे दिन, बट खास करके स्पॉटिंग एरर्स के लिए, एरर डिटेक्शन के लिए जो है कल 3 बजे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है. सो बी देयर माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ओवर देयर इट्स गोइंग टू बी अ T20 स्पेशल. बिल्कुल T20 फॉर्मेट से हम लोग बनाबन जो है 20 सवाल सॉल्व कर डालेंगे आधे घंटे में एंड दे विल बी ऑफ रियली गुड लेवल. सो डू वॉच, इन फैक्ट बी देयर बाय द वे एंड डू वॉच द सेशन which will be followed by the power play session as well. So I hope that you guys enjoyed a lot, and that was all from Adda247 and Hindu editorial. Good night, Shubh Ratri, Shabba Khair, and hey, keep studying for SBI PO pre. Thank you. Anand, the banker's Adda.com capsule maker. The same capsule which helps you out in getting good scores in general awareness portion of different examinations like SBI PO and IBPS. To help you out in the general awareness portion, I am coming with my e-learning course in which I will be teaching you banking awareness and static awareness of Indian states and union territories. Hello students, I'm Swati and I've been helping you out in preparing computer awareness for various banking examinations. Yes, computer is a very vast subject, and to help you out in understanding what to study and how to score, I've created an e-learning program for computers. We all are worried about reasoning, the level of questions and moreover the surprises. So here I have compiled a package especially for banking reasoning which will deal with every level from basics to higher levels. We have devised a unique e-learning courseware for you to overcome all the hurdles and crack your upcoming examinations. This courseware does not only consist of the previous year asked questions but also the questions based on new patterns. Quantitative aptitude. Difficult to understand so many concepts? Let's make it easy. Here I am, Sumit Verma. I have designed a course in which you will be able to understand all the concepts and all the types of questions. The Bank Power module includes 100 plus hours of high quality videos by our expert faculties, tricks and shortcuts to solve questions in a faster way, ebooks for subjects Maths, English, Reasoning, General Awareness and Computers, online test series with all India ranking and detailed solutions, online and face-to-face doubt clearing sessions, available preloaded on a tablet or SD card. I'm Gopal Anand, the banker's Adda.com capsule maker. The same capsule which helps you out in getting good scores in general awareness portion of different examinations like SBI PO and IBPS. To help you out in the general awareness portion, I am coming with my e-learning course in which I will be teaching you banking awareness and static awareness of Indian states and union territories. Hello students, I'm Swati and I've been helping you out in preparing computer awareness for various banking examinations. Yes, computer is a very vast subject, and to help you out in understanding what to study and how to score, I've created an e-learning program for computers. We all are worried
about reasoning, the level of questions and moreover the surprises. So here I have compiled a package especially for banking reasoning which will deal with every level from basics to higher levels.